Hello, check. Hello, check. I think we are live now. Let me check whether we are live or not. I think we are live. Yes, we are live. So, in this live stream today, what we'll be learning? We'll be learning about Forex, right? This is the first Forex stream of mine. Okay, let us understand the pairs and everything about Forex. Okay, and the smart money concept following it, right? First of all, which the thing which I told in the live stream in the morning, sorry for the background noises. Okay, so now let us understand what I am trying to say here, that there's something which we studied in the morning in my live stream of Nifty options. In that thing, I told you that the market is making lower highs and lower low structures, right? Market tapped, make, so this was the fresh supply, right? This was the fresh supply right here. When the market tapped on this supply and gave this beautiful 1 hour rejection candle, what I did is, okay, just observe closely. What I did is, okay, uh, I moved to 5 minute time frame, and see what you need to see is, while going up, if this is on a 1 hour time frame, we'll switch to 5 minute time frame. And by switching to 5 minute time frame, what you need to do is you need to observe very clearly how market is going up. When the market went up here, swept all the liquidity which is being created below it, then after sweeping, change the character of it. See what is change the character here? The character has been changed. Okay, the market has been shifted. It's called chalk or MSS, right? So it's called chalk or MSS. Now what market did is, market when changed the character, we marked the unmitigated supply zone, right? We marked the unmitigated supply zone, and after that market tapped on this supply zone. We can enter from this order block here. You can put stop loss right above this candle, right? And your first target was here, right? This was your first target, and the trade is of 1:2.6. But because market has taken the liquidity, internal liquidity, and then market moves from internal to external liquidity, we can target this full range till here, right? This was a 1:4 trade which happened on GBP NZD. Now how it happened, I'm explaining you one more time, okay, so that you can learn the smart money concept very easily. And remember, free of cost, you can learn the smart money concept free of cost from my side, for which you paid lots and lots and lots of money. Okay, so how it happened, the thing which happened, it's very simple. As I said, that you need to see the order flow. The first thing, let me write it. Let me write one thing. Okay, let me write one thing here. First, see the order flow, and every, okay, you can write it down, and every order block or FVG inside that order flow, inside 1 minute, and inside that order flow act
as a POI, यानी point of interest. When market taps on that POI, you can switch it on a lower time frame, and there you should wait for market structure shift, right? After market shift, take entry on the last unmitigated supply or demand. Okay, if you want, you can write this down as a note. First, see the order flow. Now, what I mean by that, you need to see market is in uptrend or a downtrend. Suppose market is in uptrend, right? So this is the order flow which is being created, higher highs and higher lows, right? Okay, suppose this is the structure of 1 hour. Now we have a P. Now what we have POI right here, and suppose market taps on this POI, right? Suppose market taps on this POI. Now what you need to do is, you need, let me draw another structure. So what will happen is, I'll zoom it out so that you can learn beautifully. Okay, so suppose this is our 1 hour structure, right? Market is breaking the structure. Now here at this point we have external liquidity, right? This is the external liquidity, and after taking external liquidity, wait a minute, after taking external liquidity, market comes on our internal liquidity. This is the order block, or the FVG is seen as internal liquidity, right? Now, 1 minute. Okay, so what is happening behind the scene? See, you need to understand, when market is coming down like this, okay, this is happening on a lower time frame. Remember, 1 minute, structure is getting, yes. So market is coming like this on a lower time frame, right here. Okay, let me take this as a color black, right? So this is our structure in a lower time frame, right? Suppose this pinkish or purplish line is 1 hour, then this black line is, let me write it, purple line 1 hour structure, okay, black line 5-minute structure. Now, so what you need to see is, so market is coming like this on a 5-minute time frame, right? Now when market takes the liquidity, see, where is the liquidity of 5-minute? Here. Where is the liquidity? Here. Here. This is the liquidity I'm talking about. When the market takes this liquidity, then gives a reaction from here, right? And then when gives the reaction from here, shifting the structure, okay, like this, when the market like this. So this is termed as market structure shift, right here. Okay,
This is termed as market structure shift or chalk, whatever you want to call, it's your wish. So this is seen as a market structure shift. Now when the market, remember, when the market did this, we have an order block, an unmitigated order block right here, right? Now what we need to do is we need to wait for the market to come on this order block, tap on this order block, and then we can take trade till this point, right? And then we can take trade till this point. This is the same thing which happens in a bearish market, right? This is the scenario which I explained in a bullish market. I'll be making a video on that also, but right now this is the clear and the best explanation of how to trade the structure, how to trade the order flow, right? Now let us understand the same thing on this thing, right? If you look very closely, the market is in a bearish order flow, right? As you can see, if you see this thing, this is a bearish order flow, right? Now for a bearish order flow, what we have is we have an unmitigated order block right here, right? We have an unmitigated order block right here. Now how this trade happens, you need to understand the logic of it, otherwise it's no use of you coming here and learning nothing. See, I want to make you an independent trader, and for that I am giving my best, giving all the things which I can give to you people for free, right? You need to learn, you need to understand this, and you will be a profitable trader very, very, very soon. Okay, so thank you for coming on this stream. If you're liking this stream, please give it a like, right? So what happened is, this is an unmitigated order clearly block right here in 1 hour time frame, right? So this is our POI. Now when I see this candle, this black candle, a rejecting candle, taking liquidity of this previous candle and giving such a reaction, it, sorry for the background noise, so it raises a question that the market could do something, right? The market could go from this order block to this point, right? So and you need to backtest this. Don't listen to me blindly. First you need to backtest this, and you need to see where these patterns are forming, right? So this order block, this candle raises a question of whether market has the capability of going up, which I think is not. Okay, so now I am switching to 5-minute time frame, right? Now when I am switching to 5-minute time frame, all I am doing is, see, if you see very clearly, there is a market structure shift right here also, right? Here also there is a market structure shift, but whether I am interested or not, no, I am not interested in that market structure shift, because market has not tapped on our higher time frame POI, right? Market has not tapped on our higher time frame POI, so I am not interested in this market structure shift, and for me this is a fake market structure shift. Okay, so now what I'll do is, and what is this? This is the noise which the market is creating right here. This is the noise which the market is creating right here. Okay, now what we need to do is, we need to wait for the market to disperse, to avoid this noise, to take this liquidity which the market take here. Now the question is, how am I saying that the market has taken the liquidity here? See, this is also a question. Now I'm going to explain another topic to you. Okay, I hope you are making notes of it, but
let me wait a minute. I hope you are making note, right? So yes, sir. Okay, thank you very much. Right? So what you need to understand is that market when takes the liquidity, what the market does is, you need to understand when the market is taking liquidity and when the market is not taking the liquidity. Okay, so whenever such movement happen and market after taking this low not react from this zone, rather breaks this zone, then can we say that the market has taken the liquidity, right? You need to understand, when the market has taken the market has taken the liquidity when the market breaks the structure to the upside, but then again breaks the structure to the downside with momentum. The momentum needs to be present. Momentum is the key. Momentum is the key, right? So coming back here, what we can see is market after breaking this high, immediately tapping on our POI, shifted from bullish to bearish after doing this market structure shift, which is also called chop, right? Now what we have here is, we have pending liquidity right here. This is the inducement or the liquidity which is being pending, and the market can take this liquidity. So, and this is the last POI which the market can tap and can react from there. So what we did is, we wait, and then when the market, after market structure shift, went to our 5-minute order block, we can place a trade from here and we can put our stop loss above the swing point, right? And the target, the first target can be right here, and the second target is the swing low point, which is this orange line, right? Now if you see very carefully, I can give you one more trade. Okay, so now this is one more concept which you can learn today, which if you want you can write yes if you want to learn one more concept here only. It's called sweeping concept in higher time frame. If you're interested in learning that concept, you can say hi yes, otherwise so okay, let me teach you that concept also, because sometimes this concept happens and people like it, people trade that concept. Okay, so first of all, let me tell you why have I marked this as a pattern and what is going on here in this zone. Okay, how a trade is forming. Leo, hi Leo, thank you so much for the reply and thank you for being present on the stream. Okay, so I hope you understand this GBP NZD trade which we were discussing in the morning, and the thing which I was explaining in the morning also about the supply and the demand zone which is being formed. Okay, if you remember, we were discussing in the morning regarding this this type of things, that the market is trying to create a supply, right? And this is what happened. But one more thing happened. Let me delete first of all this thing. So you'll learn one more thing, right? Okay, so now
See, two things happen, right? Two things happen. And what are those two things, Leo? The two things are, sometimes in the higher time frame, what happens is market, as I said, when coming down is creating supply, right? Like right here, the supply has been created, right? Okay. At the same time, market is breaking structure right here, right here. Okay. So what market is doing is, market is breaking structure here. Now, sometimes what happen is market does not close below this thing, right? Sometimes what happen is market, let me draw this candle as a green candle, okay, so that you can understand very closely. Okay, so sometimes what happen is market does not break this point and creates a wick like this, right? Now, 1 minute. Okay, right, great. So now what happen is sometimes market create something like this. Now, in these scenario, what we do is, in these scenarios, what we do is we switch to lower time frame. Like in this case, if you can see, the market does not close below it. Okay, the market does not close below this swing point and gave a beautiful reaction to the upside. Now, if we can switch on the lower time frame, what we can see is that the market has created these liquidity points. The market has created these liquidity point. Okay, now after market taking this liquidity here, which is also called, sometimes people will call it manipulation. Okay, what people will call it? People will call it manipulation, right? So this is the manipulation which happened, and market again shifted its structure from bearish to bullish, right? Market structure shift happened. Like, so now where are we looking for this pattern? We are looking this pattern when the market has not closed in the higher time frame, when the market has not closed below the swing low point, right? Now what happened here is market has structurally shifted from lower high lower lows to higher high, creating lot of imbalance and POI. Now if you can see closely, market came on this zone and gave a reaction to the upside. Now I'm not saying that the market can go up from here, remember, but again, if you look very closely, these two are the similar patterns. These two here, the manipulation phase is here. This is the manipulation which we are talking about, and this is the liquidity which market is taking, and the same is happening here. This is the liquidity which is being formed, market taking the liquidity, okay, and then giving the reaction to the upside. You can place the trade on an unmitigated order block, which was here, but then again what you have to do is you have to put your stop loss below the swing point, right? And you can book your first target till here. But when the market sweeps, sometimes the market
shows that it wants to go up, and you can take the target till here also, right? So this is how you can trade the liquidity sweep pattern. When the market sweeps liquidity on a higher time frame, then you can switch on a lower time frame to see whether the market has formed a structure like this or not. I hope you're understanding this, Leo. So this is something which we learned today about what? About how to trade the order flow and how you can mark your POI in the higher time frame and in the lower time frame, as well as how you can deal with the manipulation and the liquidity which is being framed and which is being served to you, and how people are trying to hunt your stop loss, right? I hope. Yep. Thank you for being there. Thank you for listening. Okay. And if you have any doubt, you can write and you can ask me. See, and if you remember, Leo, this is the same pattern which was being formed today in the morning. Today, if we see Nifty, right? Let me switch to Nifty so that you'll believe me that I am saying that this is the pattern which is being formed again and again and again. Now, if you see closely, right? If you see closely here, market was creating a pullback stage, right? If you look closely, market is creating a pullback stage, right? This was the last pullback. एक क्वेश्चन था, जब भी लिक्विडिटी लेता है तब डिस्प्लेसमेंट जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना ये प्रूव ही नहीं हो पाएगा कि लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत से आपको इंस्टाग्रामर्स ऐसे मिलेंगे जो रिकॉर्डेड सेक्शंस पे डालते हैं और वो बिना लिक्विडिटी चेंज मार्केट स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब तक मार्केट में तब तक लिक्विडिटी कंफर्म हो ही नहीं सकती जब तक मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलते हैं वो हो ही ना। ठीक है, तो अगेन अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। अगर मार्केट को एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो बनाना था तो मार्केट को इसके नीचे क्लोज करना चाहिए था, बट मार्केट ने क्लोज करा नहीं एंड मार्केट ने इसको स्वीप करा एंड अगेन रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ, राइट? यू कैन इमेजिन द सेम थिंग बीइंग फॉर्म्ड इन अ लोअर टाइम फ्रेम, जो भी हम 1 मिनट में स्विच करेंगे। देन हमने क्या प्लान किया कि जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा तो हम एक ऊपर की तरफ एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट? यही हमने प्लान किया था आज, ठीक है, जो ऑफ कोर्स फेल हो गया बिकॉज पैटर्न्स फेल होते हैं, बट फिलहाल के लिए जो हमारी ट्रेड थी वो यही तो थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने लो की लिक्विडिटी ली, जिसको हम स्विंग लो की लिक्विडिटी भी बोलते हैं। मार्केट ने यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट भी दिखाया, जिसको आप बोल रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, वो दिखाया। दिखाने के बाद मार्केट ने इतना सारा इम्बैलेंस पेंडिंग था, ऑर्डर ब्लॉक नीचे था, तो हमने जो है कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। हमने अपनी जो ट्रेड थी वो इस पॉइंट पे प्लान करी थी। हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग पॉइंट के नीचे था, अराउंड यहाँ, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पे था। सो पैटर्न्स फेल हुआ, बट इफ यू कैन सी, मैंने अभी आपको दिखाया कि वो पैटर्न कैसे पास भी होता है, कैसे वो प्रॉफिटेबल भी आपको बनाता है। तो द क्वेश्चन इज कि आप वो पैटर्न जहां जहां दिख रहे हैं, आप कितनी बार कैसे कैसे ट्रेड ले रहे हैं, राइट? इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, वेदर यू आर टेकिंग द रिस्क और नॉट। बिकॉज what people do is, अगर एक बार वो पैटर्न फेल होता है, then they think that the pattern is not working and it is not right. The pattern is working, the pattern will work, but you need to see how many times this pattern is giving you profit and how many times it is giving you loss, right? Then again क्या हुआ, एक छोटा सा ट्रेड रिकैप भी समझ लेते हैं कि उसके बाद मार्केट ने क्या किया। जब इस पॉइंट इसको फेल करके जब इसको लो को तोड़ा, then it was confirmed that the market is in a bearish phase and not in a bullish phase, जिसमें मार्केट लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट?
मैं लिख भी दे रहा हूं, मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई, ठीक है। नाउ इसके बाद मार्केट ने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया? मार्केट ने बेवकूफ ऐसे बनाया कि मार्केट ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, राइट, इस ब्रेकआउट पे लोगों को ये दिखाया कि मार्केट इज रेडी टू गो अप, एंड मार्केट ने एक बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। बट व्हाट, रिटेल, ऐसे ही रिटेल बेवकूफ कैसे बनते हैं, ऐसे ही रिटेल्स जो है वो बेवकूफ बनते हैं, और ऐसे ही हम बैंक्स की तरह जैसे कहते हैं उन्हें, उनकी तरह ट्रेड ले सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। तो कैसे मार्केट ने बेवकूफ बनाया और कैसे हमने उस ट्रेड अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया? बिकॉज व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, हमें ये पता है कि मार्केट में एक अनमिटिगेटेड जो सप्लाई है वो ऊपर यहाँ पर बनी हुई है, एंड मार्केट यहाँ पर टैप करके रिएक्शन नीचे की तरफ दे सकता है, राइट। अगर ये सप्लाई फेल होती देन हमारे पास जो लास्ट अनमिटिगेटेड सप्लाई थी वो यहाँ पर थी, जो काफी स्ट्रांग भी है, जिसके नीचे काफी सारा इम्बैलेंस भी पेंडिंग था। तो वो हमारी ये वाली सप्लाई थी, राइट। नाउ अगर मार्केट यहां नहीं आता तो फिलहाल मार्केट ने अगर ध्यान से देखे तो यहां पर टैप कर भी दिया। नाउ व्हील, बट मार्केट काफी बुलिश था। लेट्स सी, अभी वो कल की बात कल करते हैं। बट एज यू कैन सी, मार्केट ने इसी अनमिटिगेटेड सप्लाई पर टैप किया और हमें एक रिएक्शन काफी अच्छा दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई टू डिमांड मॉडल भी निफ्टी में बनाया, जिसको हमने डिस्कस किया था कि हम एटलीस्ट अगर मार्केट ऐसे ब्रेक देता है, लिक्विडिटी की पेंडिंग रहती है, देन वो मार्केट डू इज मार्केट अपने सप्लाई को डिमांड में बदल के ऊपर अनमिटिगेटेड कहाँ तक जा सकता है, सप्लाई जोन तक जा सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड द प्रो एज वेल एज द काउंटर ट्रेंड, राइट। राइट, ये तो निफ्टी में था। निफ्टी में फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ मूव भी दिया है, एंड ये हमारा काफी जो पूरा ये जो एफवीजी बना हुआ है, इसी से मार्केट रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। विल सी टुमारो क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम स्विच करते हैं जीबीपी एनजीडी में। एक बार मैं क्रिप्टो में एक चीज देख लूं, इथेरियम में क्या हुआ है। इथेरियम में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इथेरियम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सप्लाई बन गई है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो अगर आप खुद देखेंगे तो सब जो है वो हमारा बेयरिश हो गया है बुलिश से, राइट। ये हमारा अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट में एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, राइट, जिसका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो ये है। देन अगेन फिलहाल के लिए हमें वेट क्या करना है, अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है, चीज को आप स्पॉट करेंगे, अगर मार्केट कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट, और ऐसा जाने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, देन वी कैन प्लान अ ट्रेड फ्रॉम एन अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन जो यहाँ पे क्रिएट होगा, कहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए। दिस इज हाउ वी कैन प्लान ट्रेड इन इथेरियम, राइट, based on the strategy which we have discussed right here. Okay, let's see what will happen, sorry। तो फिलहाल जो जीबीपी एनजीटी था उसमें एक ट्रेड तो काफी अच्छी दिख रही थी। सेम वे सेम स्ट्रक्चर बना है इन आपका जीबीपी एनजीडी में ऊपर की तरफ। बीटीसी में अपसाइड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बाकी है ना, 15 मिनट। एक क्वेश्चन था जब, ठीक है, बीटीसी में अपसाइड ट्रेंडिंग लाइन लिक्विडिटी बाकी है, देख लेते हैं। सी ब्रदर, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बार हर लिक्विडिटी को ले, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हर बार बनी होगी तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी लेना चाहेगा। बट हाँ, इसमें एक बाइंग जो है वो कहाँ तक और क्यों बन रही है, एक मैं आपको वो चीज भी बता दे रहा हूँ। एक सेकेंड बस। देखो,
बीटीसी में अगर पहले हम 1 आवर पे आते हैं, ठीक है, 1 आवर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट अपने एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन पे टैप कर रहा है, ठीक है, और टैप करने की वजह से मार्केट रिएक्शन दे रहा है। ग्रेट। अच्छा, अब आते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो आप देखना चाह रहे हो उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर फ्लो आपको कैसा दिख रहा है, ऐसे देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। बेयरिश ऑर्डर फ्लो है, बेयरिश ऑर्डर फ्लो यहाँ ब्रेक हुआ, बट ऊपर की तरफ मार्केट ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद फिर नीचे आया लेकिन क्लोज नहीं दे पाया। राइट, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यही चीज हमने अभी पढ़ी, क्लोज नहीं दिया इसने, इसने स्वीप करी और ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट, अच्छा, ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते थे, जब मार्केट ने इसको क्लोज नहीं किया और ऊपर की तरफ रिएक्शन किया, तब हम एक बार स्विच करेंगे 1 मिनट में, देखेंगे अगर कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी बन रही थी कि नहीं। इफ यू सी क्लियरली माय ब्रदर लियो, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेने के बाद, ठीक है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा आप ये बात, ठीक है, यहां पे किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। राइट, यहाँ पे किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने एंट्री कहाँ दी, ये था हमारा लिक्विडिटी पॉइंट, ये जोन था लिक्विडिटी का। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ना टैप करके प्रॉपरली हमारे FVG पे एंट्री, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके, एक्चुअली जस्ट हैमर प्लस बिल्कुल MMS इन 1 मिनट। राइट, ब्यूटिफुल एंट्री इन, और यही सेम चीज अभी हमने सीखी है, 5 मिनट पहले यही सेम चीज हमने स्पॉट करी है। राइट, यही सेम पैटर्न अभी 5 मिनट पहले हमने स्पॉट किया है कि मार्केट अगर क्लोज ना दे पाए और ऊपर की तरफ विद लॉट्स ऑफ इम्बैलेंस प्लस लिक्विडिटी, तो हमारी जो पहली ट्रेड बनती बीटीसी में 1 मिनट में, वो इस लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बन सकती थी। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहता, पहला टारगेट हम इस पॉइंट को ले सकते थे, ठीक है, तो 1:2 की रेशियो हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एज अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मार्केट जो है वो मूव कर रहा था, वैसे वैसे हम मार्केट के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। मस्त था एंट्री, बट मैंने लेट देखा, मैंने अभी देखा जस्ट आपको समझाते हुए। सो राइट, सो दिस वाज द एंट्री, ग्रेट एनालिसिस। एंड लियो, अगर आप चाहे तो ऐसी सेम एनालिसिस आप अपने शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, इसीलिए ग्रुप बना है। अभी आप जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात कर रहे हो, होपफुली आप शायद इसी लिक्विडिटी की बात कर रहे हो। आई होप आप इसी लिक्विडिटी की बात कर रहे होंगे, ट्रेंड लाइन की अगर आप कह रहे हो, या लियो, is this the entry, या is this the trend line you're talking about? मस्त भाई, क्योंकि देखो मस्त टारगेट छोड़ो आप, सबसे बढ़िया बात ये है, देखो हमारी ट्रेड वैसे तो ऑलरेडी हो गई क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे दिया स्टिल, लेकिन क्योंकि ये इतना सारा जो इम्बैलेंस पेंडिंग है मार्केट में, इसको रीबैलेंस करने के लिए मार्केट बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। तो हम अपनी जो ट्रेड है वो कहां तक प्लान कर सकते हैं, इस बेयरिश ऑर्डर फ्लो तक। ये जो हमारा बेयरिश ऑर्डर फ्लो बन रहा है, राइट, यहां तक तो हम अपनी ट्रेड एटलीस्ट प्लान कर सकते हैं। राइट, और ये अपसाइड क्यों देगा, ये अपसाइड इसलिए भी दे सकता है क्योंकि मार्केट ने एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करा हुआ है। राइट, और वहां से बहुत ब्यूटीफुली अगर हम देखें इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी, तो भी मार्केट ने स्विंग पॉइंट को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद रिएक्शन भी दिया है। अगर हम उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, देन अगेन 15 मिनट्स में भी सेम पैटर्न, उसके बाद मार्केट
ऊपर की तरफ जा रहा है एंड दिस ट्रेड कुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। ग्रेट। ये बहुत सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसके ऊपर काफ़ी इम्बैलेंस है जिसको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, तो हम ऑर्डर फ्लो तक ले सकते हैं। ग्रेट। तो दिस इज़ द लर्निंग जो हमने आज करी है रिगार्डिंग। आई होप आप लोग कुछ सीखे होंगे, आई होप लियो आप कुछ सीखे होंगे, आई होप आपको शायद पता हो ये चीज़ें, बट आपको एक वैलिडेशन मिल रहा होगा कि ओके यू आर ऑन द राइट पाथ एंड व्हाट यू आर लर्निंग इज राइट। एज अ ट्रेडर हम यही तो चाह रहे होते हैं दैट हमें हमारे एनालिसिस का बेनिफिट मिले एंड जो भी हमने मेहनत करी है इतने टाइम तक उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, राइट। फिलहाल के लिए फॉरेक्स में देख लेते हैं अगर कुछ पैटर्न या कुछ बन रहा है तो। यस भाई लर्निंग कर रहा हूँ। ग्रेट भाई ग्रेट, ऐसी लर्निंग करो आप भी, लर्निंग तो हम सब कर रहे हैं, आप भी करो। अब देखो मार्केट में कितना ब्यूटीफुल, अगर 15 मिनट में ही देख लेते हैं, ठीक है, एक 15 मिनट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में 15 मिनट में अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, कंफर्म नहीं है बट हाँ, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट में एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन जो है वो ये है। अगर मार्केट को कुछ भी रिएक्ट करना होगा ऊपर के लिए तो मार्केट यहाँ से कर सकता है एयूडी यूएसडी में, राइट। अगर कुछ भी करना होगा, बट अगर हम वन आवर देखें तो 1 आवर में भी सेम सेम चीज़, सेम यही ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अगर नीचे आके कुछ रिएक्ट करना चाहेगा तो विल लुक, अदरवाइज कुछ ऐसे फायदा नहीं है। बट एयूडी यूएसडी नीचे भी आ सकता है। हाँ भाई मैं टीचर हूँ, पिछले कितने साल हो गए, 10 साल से तो टीचर हूँ। स्टॉक मार्केट का टीचर नहीं था, स्टॉक मार्केट का टीचर मैं थोड़ा लेट बना हूँ, बट वैसे मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ वो पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। और बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टीचिंग मेथड है वो अच्छा है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लोगों टीचिंग, देखिए बात पता है क्या है मेरे भाई, बात ये है कि आज के टाइम पे हर कोई सिखाना चाह रहा है ये चीज़, बट द पॉइंट इज़ कि टीचिंग भी एक आर्ट है, राइट। टीचिंग में बहुत प्रॉपर स्किल लगती है, आपको किसी को कोई चीज़ डिलीवर करने के लिए आपको समझना पड़ता है कि सामने वाला वो चीज़ समझ रहा है कि नहीं, एंड अगर वो नहीं समझ रहा तो आपका मेथड जो है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। तो मैं यही ट्राई करता हूँ और इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ एंड आई वेट फॉर योर कमेंट्स। भाई मैं कानपुर से हूँ, राइट, तो इसीलिए आई वेट फॉर योर कमेंट्स, आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू पीपल एंड टू अंडरस्टैंड दैट आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, जो मैंने मार्केट से सीखा है मैं आपको वो चीज़ दे सकता हूँ, राइट। एवरीबडी इज ट्रेडिंग द मार्केट विद देयर ओन स्टाइल, विद देयर ओन, कुछ स्कैल्प करते हैं, कुछ पोजीशन बनाते हैं, कुछ और कई मेथड्स पे ट्रेड करते हैं, बट जो मैंने लर्निंग ली है आई वॉन्ट टू गिव यू पीपल दैट लर्निंग, ओके। तो दैट इज माई मेन मोटिव, राइट। सो जीबीपी एयूडी पता नहीं, आई थिंक आईसीटी ट्रेडर ने भाई ने बताया था, अगर वो है। मैंने फिलहाल के लिए वेट कर रहा हूँ इस डिमांड को मिटिगेट होने का, एक बार देख ले रहा हूँ कि डिमांड जोन सही है, डिमांड जोन सही तो है, लेट्स सी यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता, कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाना चाह रहा है, सॉरी नीचे ही जाना चाह रहा है, विल सी। बिकॉज मार्केट ने सप्लाई, देखो सबसे बड़ी बात है मार्केट ने एक सप्लाई जोन पे टैप करके रिएक्शन दिया है, तो इट शोज दैट द मार्केट में सप्लाई इज इन कंट्रोल, राइट, एंड दैट इज वाई अभी हम इसमें
कुछ ज़्यादा घुसना नहीं चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लिक्विडिटी स्वीप करके रिएक्शन दिया है, तो मैं इसीलिए एक बार वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए तो हम कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में कुछ एंट्री दी। जीबीपी जेपीवाई में दिस वीक इज द लास्ट डिमांड जोन। अगर मार्केट इसमें टैप करता है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका ऑर्डर फ्लो है, राइट, जिसमें मार्केट ऑलरेडी टैप कर चुका है और रिएक्शन भी दे दिया है। एंड अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपकी ट्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मार्केट ने स्विंग पॉइंट बनाया अगेन, जो हमने सीखा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बनाया, स्विंग को स्वीप किया यानी क्लोज नहीं कर पाया और ऊपर गया। ठीक है, अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, फिर से देखते हैं क्या कोई एंट्री बनी थी ऐसी, क्या मार्केट ने कोई एंट्री दी थी। ये हमारा था टाइम फ्रेम, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को करा शिफ्ट, राइट। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो मार्केट में स्ट्रक्चर हुआ शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, इस पॉइंट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ विद इम्बैलेंस के बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो मार्केट में जो अनमिटिगेटेड डिमांड थी, ठीक है, एक थी ये वाली इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके ऊपर एक इम्बैलेंस है, उसके बाद हमारी ये मिटिगेट हो गई थी, बट मार्केट ने इसी को लिया और रिएक्शन दे दिया ऊपर की तरफ। नीचे देखिए फिर मार्केट आया ही नहीं, राइट। तो ये ट्रेड थी, एक बन सकती थी, पॉसिबिलिटी थी ट्रेड की, बट ये भी ठीक ट्रेड होती, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे स्पॉट। अभी अगर फिलहाल के लिए आप देखें तो मार्केट में ये एक लास्ट, मुझे लगता है यार यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ गिर सकता है बहुत। जीपीवाई में मार्केट कैन फॉल फ्रॉम हियर एट फ्रॉम दिस सप्लाई जोन टिल वेयर, टिल आई एम सो सॉरी, टिल दिस पॉइंट, लाइक मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अपने डिमांड को मिटिगेट करने आ सकता है, नॉट कंफर्म, देखा जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में जाके जब मार्केट यहाँ पहुंचेगा, बट ऐसा हो सकता है। ओके, एनजीडी कैड अपने सप्लाई पे पहुंच तो गया है, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। मार्केट में स्ट्रक्चर यहाँ पे स्विंग हाई था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दिस इज द लास्ट सप्लाई जोन। मार्केट में एक बार देखते हैं कि क्या मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर बना है, मार्केट बहुत चॉपी स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। लिक्विडिटी भी है फिलहाल के लिए, लेट्स सी। एनजीडी कैड का इंफॉर्मेशन कल मिलेगा क्या मार्केट ने किया, बट अगेन द सेम थिंग विच वी हैव लर्न टुडे, मार्केट में ये मैंने 4 आवर में मार्क किया हुआ है, राइट। एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो को अगेन मैं ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मार्केट है अभी टैप नहीं किया है, टैप करेगा तो हम प्लान करेंगे कुछ नीचे की तरफ, राइट। फिर इसमें तो मुझे कोई ट्रेड लेनी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, मेरा मन नहीं है। यूएसडी जेपीवाई आईसीडी ट्रेडर भाई कह रहे थे मार्केट में कुछ रिएक्शन आ सकता है नीचे की तरफ, हमारा था, हमने मार्क भी किया था स्ट्रीम पे, देखते हैं। और जीबीपी कैट यही धीरे धीरे जा रहा है, एक बार देखेंगे कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं आता। ओके भाई, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट। कल मिलते हैं सुबह पर। इसमें है यार, एक बार वेट करते हैं, 1 आवर है, 5 मिनट्स में वेट करते हैं, लेट्स सी। सॉरी, इसमें देखते हैं, मार्केट ने करा तो वही है, वही सेम पैटर्न। ओके, so thank you everybody for being present. If you like the stream, please give it a like, give me a support. If you want, you can join my telegram group. चलो बाकी मिलते हैं कल on Indian markets. I hope I'll give some insightful information on there too. Okay, thank you so much, bye bye.